सर अब हो गई है, मैंने लेफ्ट करके यही तो मैं कह रहा था ना कि स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही थी। हाँ जी चले। तो हम पढ़ रहे थे कोलेस्ट्रॉल से हमने ऑनवर्ड स्टार्ट करना था। और हमारा जो आप आज का टॉपिक था वो था, और कोलेस्ट्रॉल जो है फोर फ्यूज रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। यस हाँ आ जी। रही है। अच्छा, तो फोर फ्यूज रिंग स्ट्रक्चर हैं। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इस तरह अगर आप देखें आप स्ट्रक्चर को, तो फोर फ्यूज रिंग स्ट्रक्चर्स ए बी सी एंड D, these are four fused ring structures, and here is the polar head. And A, B, C, D, for example, these are the four fused rings. 21, 22, 23, 24. So up to 27 कार्बन जो है वो अल्काइल साइड चेन है। अगर हम इसी कोलेस्ट्रॉल को जो है वो कंटिन्यू करते हैं तो स्टीरॉइड्स हार्मोन, देयर आर डिफरेंट स्टीरॉइड्स हार्मोन्स व्हिच आर मेड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल खुद खुद जो है इटसेल्फ वो आइसोप्रीन्स यूनिट से मिलके जो है वो बनता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो आइसोप्रीन्स जो हैं, आइसोप्रीन्स क्या है कि 5 कार्बन कंपाउंड्स हैं विद डबल बॉन्ड्स, कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, और उनसे जो है वो मिलके डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर बनते हैं, और कोलेस्ट्रॉल भी जो है वो उसी से डिराइव्ड होता है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल जो है खुद इटसेल्फ डेरिवेटिव्स है बहुत सारे हार्मोन्स का, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन एंड so if you look here, so testosterone, estradiol, cortisol, aldosterone, prednisones, and prednisones, all these are the structure which are derived from cholesterol. Testosterone, if you look, all these structures all have four fused ring structures, and the difference is like this. So except estradiol is the hydroxyl group, polar head of this cholesterol, all have the change structure with oxygen. As this one have the polar head, so hydroxyl has the polar head, and this one, except this estradiol, all are changed with this ketone. That's why if you look, they are testosterone, cortisol, aldosterone, prednisones, and prednisolones. And they have also these both structure, testosterone, estradiol, have no carbon long chains. So that's hydroxyl group here. And cortisols and aldosterones are basically, if you look here in this diagram, so they have this these structures like this ketone, aldehyde structure, aldosterones like aldehyde structures. Prednisolones have this one keto carbon here and this one here, and prednisolones. So they have different structure. You can remember them. Then we have the synthesis of vitamin D. For example, you have this cholesterols, and you can derive from cholesterol this carbon 9 and 10 ring are broken down. So they from four fused rings you have now three ring structure here, and from this three ring structure calciferols, what we call it vitamin D3, uh, one step in the liver and one in the kidney, and this is active forms dihydroxycalciferols. So it's involved in regulation of the calcium metabolism. For example, if a child who began life at the closest before vitamin D, if it's vitamin D deficiency, and after treatments with vitamin D, that is the difference. So how vitamin D is how much important for your bones and for your healthy lives. Then there are the isoprenes are again the part of these beta carotenes. And if you look here are all different red lines showing that until here they are the isoprenes. Why? Because if you look here, there is one branched carbon. In all these structure, there is one branched carbon. So isoprenes units, different isoprenes units are going to make combine together and making this beta carotenes. And beta carotenes are cut in between the center point cleavage. So one ring from one side and one on the other side. So this is side one ring structure like
vitamin A, and oxidation of alcohol to aldehydes, cis retinols, visual pigments है, and then visual lights पड़ेगी, तो then you have retinols and neural signal to the brains, and retinoic acid and hormonal signal to your epithelial cells. Then we have isoprenes vitamins like vitamin E. They are also made from these are different vitamins which are synthesized from isoprene units. And isoprenes, as I told you, this is 5-carbon compound with one branching points here. So here, if you look, these red lines show that there are different isoprenes which are coming together and making the structures. So this is the structure of vitamin E, this is structure of vitamin K, and here is the warfarin is another proteins what we call blood anticoagulants. This one 3-ring structure like this. These are the structure of mitochondrial chloroplast membrane carriers. These are also like isoprenes units, ubiquinones and plastoquinone. And like this one is the carotenoids, like if you look in this, so you have the have oxygen like this one and like this keto oxygen here, so that's called canthaxanthine, and the color of the bud will be the red. But if they have the ring structure, but this one hydroxyl group, or on the other side hydroxyl group, this is called the zeaxanthine, and the color of the bud will be the bright yellow. So we can say that there are lipids which act as a pigments to these colors. So after knowing all about this, we have one other thing what we call it the chylomicrons. Chylomicrons जो हैं वो lipoproteins जो हैं उनकी types है, and these are facilitate the lipid absorptions. Lipids are absorbed based on the structure and circulatory system. Glycerol and short to medium chain fatty acid, for example, long chain fatty acids combine with phospholipids and cholesterol and chylomicrons. Here, if you look in the structures, you have this blue head of these lipids, which is these are phospholipids. Central is the fat droplets, which are surrounding like this. So these are the structure of chylomicrons, which are too large to absorb directly into the bloodstream, travel through the lymph fluids, enter bloodstream through the thoracic ducts. If we say that how they are going to be, so you have your food have the fats basically, and these fats are going to be transported from your food to the either blood circulatory system, or if these chylomicrons are little bit bigger, so they will diffuse in the lymphatic system. If you look here, so this is the lacteal and chylomicrons which are in your lymphatic systems. As I told you before that chylomicrons are basically lipoproteins. So lipoproteins are basically structures which are, as proteins are, lipids are not solubilized in blood. So blood always carry the lipids as a lipoprotein structure. और वो लिपोप्रोटीन स्ट्रक्चर जो है उसमें काइलोमाइक्रॉन्स हैं, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन. And they are these basically lipoproteins like here if you see VLDL, LDL, or HDL, globular molecule with lipid center surrounded by the plasma membrane. Density determine the function. More protein, higher the density. And lipoproteins are very low density lipoproteins, for example, become HDL, what we call it the bad cholesterol. Low density lipoprotein HDL जो है वो good cholesterol कहलाती हैं. HDL and VLDL level can be used to determine the health of the arteries. आपकी arteries का अगर level check करना हो उनकी health का, तो उसमें LDL और HDL में से कौन कौन सी जो है वो मौजूद है. बाकी जो है वो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ. इसको क्या कहते हैं, हाँ एक और चीज, अगर VLDL के बाद जो है वो फिर जो है वो क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं in what we call it the quick reviews. Most fats are digested in small intestine with the help of bile acids and pancreatic lipases. Short and medium chain fatty acids are absorbed directly into the blood stream. Long chain fatty acid and other remnant of the fat digestions packed in the chylomicrons, liver proteins, travel in the lymph before entering the bloodstream. Lipoproteins are globular shaped transport carriers. Outer shell high in proteins and phospholipids. Inner core carrier the insoluble fats, cholesterol. और इस outer shell जो phospholipids का है और proteins का जो है, उसी वजह से ही जो है वो मतलब है कि
आपके जो है वो ब्लड में या बाकी सिस्टम में जो है दीज लिपोप्रोटीन जो है वो कैरी होके जाती हैं. फॉर एग्जांपल VLDL HDL आर सिंथेसाइज्ड इन द लीवर. ठीक है, दीज आर गुड गुड लीवर गुड कोलेस्ट्रॉल भी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि लीवर आपने जो सिंथेसाइज करना है कोलेस्ट्रॉल, वो सिर्फ उसने वो करना है सिंथेसाइज जो कि आपके लिए अच्छा है. ठीक है, so that's why VLDL eventually become LDL after depositing some fatty acid in the body cells. And LDL deposit cholesterol in the cell and arterial walls, इसलिए हम उसको कहते हैं bad cholesterol. And HDL remove cholesterol from the arteries and deliver into the liver to be used in the synthesis of bile and excreted in the feces. So फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स आर सोर्स फॉर ऑफ एनर्जी. फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल बेसिकली उससे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, लेकिन वो आपको जो है वो विटामिन और बाकी जो है वो मेटाबोलाइजेशन के सोर्स के तौर पे एक्ट करते हैं. फॉर्म बॉडी स्ट्रक्चर, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, एनहांस एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, प्रोवाइड इंसुलेशन टू हेल्प रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर. कोयंस जो है कशंस टू मेजर ऑर्गन्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं. एंड देन वी हैव बेसिकली what we can say is the essential fatty acid eicosanoid and cell membrane. So EPA or arachidonic acid are used to manufacture eicosanoids. Eicosanoids are hormone like substances जो हमने पहले भी पढ़े हैं. Prostaglandins, thromboxins, leukotrienes regulate the immune system, blood clotting, inflammation and blood pressure. And then we have this cholesterol as a structural part of the cell membrane, precursor to vitamin D, precursor to bile acids, precursor for different sex hormones like estrogen and testosterone. And here if you look in this diagram, so these are the fats which are involved for energy and cushions and blood body temperature maintaining, essential fatty acids. But there are some EPA, eicosanoic acid and DHA which manufacture prostaglandins, thromboxins and leukotrienes. Prostaglandin, thromboxin, leukotrienes, these regulate the immune system, blood clotting, inflammation and blood pressures. And then essential function of cholesterol, like it need to make the vitamin D, bile acids, sex hormones. And if we can say inadequate amount take for the essential fatty acid alpha linoleic acids, एडिक्वेट इनटेक जो है वो मेंस जो है वो 1.6 ग्राम्स पर डे जो है वो यूज करनी चाहिए. वीमेंस जो है वो 1.1 ग्राम्स पर डे. लिनोलिक एसिड्स लाइक दिस वन. और अगर हम यहाँ बात करें कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज नंबर 1 किलर ऑफ द एडल्ट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, एंड दैट्स इज बिकॉज फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स आर accumulated in the arteries, blood flow is impeded and not enough oxygen to the heart and chest, and that's why we have chest pain. तो यहाँ पे हमारा ये लिपिड्स का जो है वो हम स्टॉप करते हैं, इसको ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पे. तो ये चैप्टर 10 है. कुछ पार्ट्स जो हैं वो चैप्टर में इंक्लूडेड हैं, कुछ जो हैं वो आखिरी कुछ स्लाइड्स हैं जो कि थोड़ी सी रिपीटेड भी हैं, लेकिन जस्ट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन के LDL VLDL जो पार्ट्स यहाँ पे मौजूद है वही आपने लिपिड्स का तैयार करना है. कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते. हेलो, अटेंडेंस लगा लिए सब लोगों ने तो ठीक है. जी सर लगा दिया. माशाल्लाह अच्छा पढ़ाया आपने. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज सर.